Honorable Governor of Gujarat and Chancellor of this university, Sri Acharya Devvrat. There is everything in him for me to envy. He represents authentically the farming community. Our visionary Prime Minister is always nuclear in his functioning. When he introduced me to Rajya Sabha, he did not call me farmer, he called me Krashak Putra. So Krashak is here. I envy him more because like him, I was also Governor of the State of West Bengal, Chancellor of several universities, more than 3 dozen, and of 11 private universities as visitor. मुझे तो समझ में नहीं आता कन्वोकेशन इतना अच्छा भी हो सकता है. He is extremely lucky, and lucky on 2 counts. Governor of the State of Gujarat. Shri Bhupendra Bhai Patel, Honorable Chief Minister of Gujarat, a man of sublimity, simplicity, modesty. But when I went to Punjab University as Chancellor, I remembered the Honorable Chief Minister. I'll tell you why. I had made a call to the alumni of Punjab University that time for them to get united and give back to their university. So one gentleman who came from abroad donated 3.5 crores. After giving that amount, he was walking. Someone tapped him, come back. Is the memento for me? I then rose and said, भारत बदल गया है, गुजरात से शुरुआत हुई है, मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा कि क्या मुझे बुलाया गया है मुख्यमंत्री पद के लिए. और फिर ये बात यहां तक रुकी नहीं, राजस्थान पहुंच गई, छत्तीसगढ़ पहुंच गई, मध्य प्रदेश पहुंच गई. Congratulations to the Honorable Chief Minister for a very, very successful, vibrant Gujarat. It was a delightful moment to listen to dignitaries at vibrant Gujarat, top business leadership of the world and of the nation, and of the world in the nation, because we have business leadership in Gujarat that is having leadership at the global level. गुजरात आते ही कुछ अच्छा होना लग जाता है. But let me tell you, boys and girls, गुजरात जब दिल्ली जाता है तो उसका असर गुजरात पर तो पड़ता ही है, देश पर भी पड़ता है, पर दुनिया पर भी पड़ता है. Gujarat has emerged as a brand under the visionary leadership of Prime Minister Modi कि अब कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगता है, नाम ही काफी है. श्री ऋषिकेश भाई पटेल जी, Honorable Education Minister of Gujarat, and now don't take your Vice Chancellor by face value. Dr. Nirja Gupta, extremely talented. She is going to be very tough with you. But my personal experience, boys and girls, is the teacher and the chancellor and vice chancellor you fear the most. You remember them all your lives because those shaped you. They give you spinal strength. पर इनका इम्पैक्ट तो मैंने देखा. 8 को मेडल दिया, 6 इनके जनरल. Imagine.
We had the great good fortune in 2023 September, when after 3 decades of unsuccessful attempts, half humanity of this nation was given constitutional recognition to be members of Lok Sabha and state legislatures to the extent of 1/3. मैं गुजरात आया हूं, गुजरात साधुवाद का पात्र है, पर 1/3 रिजर्वेशन दिया लोकसभा में, विधानसभा में. इट इज हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल. और कानून में वो कब बदला? जब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दस्तखत. पर अचानक 21 सितंबर को मैंने यूं ही पारित हुआ, मैंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको जन्मदिन की बधाई. वो दिन उनका जन्मदिन था हिंदू तिथि के अनुसार. कैसा संयोग था कि जिस व्यक्ति ने, जिस महानुभाव ने, जो 3 दशक तक नहीं हो पाया, इस तरीके से सफल किया कि सब एक मत हो गए और 1/3 रिजर्वेशन हो गया. पर यहां देखता हूं, वहां तो हमारे लिए 2/3 या उससे कम रहेगा, क्योंकि 1/3 से ज्यादा ही रहेगा. यहां तो मैडम आपने 20% में समेट दिया. That is indication of times to come. Boys, take care. Shri Piyush M. Patel, Registrar, Gujarat University. We have in the audience some distinguished people. If you don't recognize their presence, because they have earned their position very hard way, you may be a loser. I don't want to be loser in the land of Gujarat, and therefore I recognize the presence of Shri Bharat Bhaskar, Director, IIM Ahmedabad, Srimati Shanti Shri, Pandit, Vice Chancellor, Jawaharlal Nehru University. An enormously gifted Additional Secretary of Rajya Sabha, Dr. Vandana Kumar, very talented. The faculty is the real strength of an institute. Pardon me if I miss out some name. Sri P.N. Gajar, Dean Science, Professor Rushikesh Mehta, Dean Law, Professor Rashmikant Dave, Dean Medical, Professor Dharam Singh Desai, Dean Education. Have I missed some name? I am always open to correction. And being a married man for 45 years, I am quick at it. Never give your spouse time to correct you. The moment you get a feel of, boys and girls, you will be entering into that area very shortly. Keep this in mind. This emanates from one who has been senior advocate for 3 decades, but there will be no fee memo for you. It is free. But they say in the United States, there is nothing like free lunch. The gain is mine. I am generating a connect with you, which will be everlasting. When I entered these premises, I had the good fortune to inaugurate a center, research center, a center named after 2 outstanding sons of Bharat, Shri Atal Bihari Vajpayee and Shri Abdul Kalam. Atal Kalam Research Center. I'll come to that later. It is need of the hour. It is very timely. Congratulations to Dr. Nirja and her team. This research center will be nerve center and epicenter. Let me focus right now, while later on, of the change we have to face. Disruptive technologies, you all have heard of it.
artificial intelligence, Internet of Things, machine learning, and 6G is around the corner. We have quantum computing mission in India, one of the few countries to have it. We have green hydrogen mission. It is time that you engage in research, avail the opportunities, and make our Bharat proud. We are home to 1/6 of humanity. They say early bird catches insects more. You are early bird. You please take the initiative. Engage in innovation and research. And from this platform, I declare, time for our corporates and industry and business and trade to handhold institutions for research and development. It is with pain I am telling you all, in 2009, Government of India made available an amount of $5 million to a foreign university. I'm not against making donations anywhere on the planet, but why not in our country? $5 million in 2009. $50 million were made available to foreign university by an industrialist. I'm not against it, but why not in our country also? Time for our industry to handhold educational institutions so that by research and development engagement, the young boys and girls are fully positioned to fully exploit positive aspects of disruptive technologies. You'll have to find answers. A deep fake can ruin our reputation. A wrong narrative can get into a wildfire shape. You have to combat it. Brilliant minds, discerning minds like you have to find answer. When it comes to green hydrogen mission, Gujarat is land of innovation, not at national level, at global level. This place must be a nerve center. Green hydrogen that has a potential to generate employment for about 6 lakh people, bring investment of more than 8 lakh crores. You must focus it here. I'm sure you will. But that was with respect to Atal Kalam Research Center. And let me tell you, boys and girls, an incident. Abdul Kalam was part of ISRO. There was a mission of ISRO. The director said this is not the right time. The elements that are required to take a decision whether you should take off or not. Dr. Abdul Kalam insisted, we must go ahead. A decision was taken by him. He was not the number one man. The mission failed. Dr. Kalam was crestfallen. Normally, the person in charge of the mission addresses the media. The director went to the media and said, we'll succeed next time. Next time did come. Dr. Abdul Kalam succeeded. He insisted that the director goes to the media. Director said, no, Dr. Abdul Kalam, you go to the media. This hand-holding is apparent effectively in our Prime Minister Shri Narendra Modi ji. In Tokyo Olympics, our hockey girls team did excellently, but could not get into last four. Our girls were crestfallen. The Honorable Prime Minister talked to every girl player. Those girls were having tears in their eyes. But those tears were sparkle. They were diamond. That Prime Minister of a country with 1.4 billion people, home to 1/6 of humanity, with civilizational depth of 5,000 years, is hand-holding them. That is the spirit you must always remember. If you hand-hold anyone,
In your own way, you should handhold. I was Governor State of West Bengal in 2019. The month was September. Chandrayaan 2 was to land on moon. The landing was fixed at little past over 2 a.m. That's after midnight. Me and my wife, we were there. We invited about 500 boys and girls, school-going boys and girls. Chandrayaan 2 landed, came very close to lunar surface. And then the landing was not perfect. There was pin drop silence. I thought I must cheer up the boys and girls. Just then, Indian Prime Minister on the screen. We have succeeded more than 90%. We'll succeed next time. And we did succeed. On 23rd August 2023, a global history was made. The date is Space Day. Chandrayaan 3 landed on South Pole of Moon. No country has ever landed there. We are the first country to land there. And पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी चांद पर तिरंगा पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट हो गया। मेरे कहने का मतलब यह है, आप कभी घबराएं नहीं, कभी डरे नहीं। प्रयास इसलिए मत छोड़ो कि फेल हो जाएंगे। Believe in your power. If you don't succeed, that is not failure. Don't be in the grip or captivity of fear of failure. Boys and girls, I am extremely delighted to be associated with the 72nd Convocation Address. A big relief to you. I am not going to give you any advice. Honorable Governor, with his rich experience, having nurtured institutions from farm to education, खेत से गुरुकुल तक, इन्होंने बड़े विस्तार से आपको बताया है। उन पर मनन कीजिए। They will help you all your lives. It is an honor to be in the land of such people like Gandhi ji and Modi ji. यहाँ आकर एक सुकून मिलता है, जीवन दर्शन मिलता है। It helps you to make way forward meaningfully for the society. इस कन्वोकेशन की एक खास बात है जो नजर भी आ गई थी, यहाँ भी आ गई थी, देख भी रहा हूँ। डॉक्टर नीरजा गुप्ता is the first vice chancellor of this university, first woman vice chancellor of the university. जब इनकी बात करता हूं तो प्रधानमंत्री जी ने ठान ली 2014 में कि देश की आधी आबादी के साथ न्याय ही नहीं होगा, पूर्ण न्याय होगा। और उन्होंने क्या कदम उठाए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत किसको होती है शौचालय के लिए? हर घर में शौचालय हो। लोगों ने सोचा नहीं था तब 130 करोड़ के देश में शौचालय कैसे बनेंगे। आज ये जमीनी हकीकत। उन्होंने ठान ली कि किलोमीटर चलकर मटका रख राजस्थान से आया हूं, मेरे से ज्यादा कौन जानता है। माताएं बहनें वो पानी लाती थी। अब हर घर नल और नल में जल। आगे चलिए देखिए, फूकनी, आपके यहां भी फूकनी कहते हैं गुजराती में। चूल्हे में फूकनी कर कर दादी नानी बुआ माँ बहन हमारे लिए खाना खाती थी। आंखों में धुआं जाता था। 10 करोड़ से ज्यादा घरों को मुफ्त कनेक्शन दिया। परिवर्तन आया जबरदस्त। उससे भी बड़ा परिवर्तन आया, बैंक में कदम रखते हुए जोर आता था। वकील बना तब 6,000 रुपये। आजकल लोग बात करते हैं 6,000 करोड़। मैं बात कर रहा हूं 6,000 रुपीज आई वॉन्टेड फॉर माई लाइब्रेरी। I now remember very vividly kindness of that bank manager
who could facilitate it. और अब 50 करोड़ लोगों का बैंक में अकाउंट होना, बैंकिंग इंक्लूजन होना और सरकारी सहायता अब बिना कटौती के, बिना बिचौलिए के 100% वहां पहुंचती है। यही कारण है कि भारत आज दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति है। भारत आज बड़ी आर्थिक शक्तियों में सबसे ज्यादा तीव्र गति से बढ़ने वाली आर्थिक शक्ति है। हमने कनाडा को, यूके को, फ्रांस को, इनसे आगे हम निकल गए और आने वाले 2-3 साल में ही हमारी ये यात्रा, विकास की यात्रा, आर्थिक प्रगति की यात्रा, we will have the distinction of being the 3rd largest global economy by end of this decade, overtaking the economies of Japan and Germany. Amrit Kal is our Gaurav Kal. Amrit Kal is our Kartavya Kal. अमृत काल में बहुत मजबूत नींव आने वाले भारत की रखी जा चुकी है। जब भारत 2047 में अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाना होगा तो भारत को वहां तक पहुंचाने में पूरा भार आपके कंधों पर है। हम में से कुछ नहीं रहेंगे। यू आर दी फुट सोल्जर्स। It will be on your shoulders that Bharat, at the attainment of centenary of its independence, will be the most developed nation of the world and a global leader. और ये हमने करके दिखा दिया है। दुनिया में भारत आज किसी का मोहताज नहीं है। हमारी विदेश नीति कितनी कारगर है कि भारत के प्रधानमंत्री ने 5000 साल की सभ्यता को दृष्टिगत रखते हुए दुनिया को 2 संदेश दिए। दिस इज नॉट एन एरा ऑफ एक्सपेंशन। और भारत ने ऐसा कभी नहीं किया। आक्रमण झेले हैं, हमारे मंदिर टूटे थे, पर भारत ने कोई ऐसा कुकृत्य कभी नहीं किया। एंड सेकंड, ऑल ग्लोबल कॉन्फ्लिग्रेशंस एंड इश्यूज मस्ट बी डिटरमिन्ड बाय डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। ये नीति है। और तभी तो देखिए जो कुछ भारत में हो रहा है, 10 साल में अलग छोड़िए, अब 6 महीने का देखिए। 6 महीने में G20 दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन भारत मंडपम में हुआ। दुनिया के 10 बड़े कन्वेंशन सेंटर्स में से एक है। भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व के नेताओं को जब रिसीव किया, बैकड्रॉप में क्या था? सन टेम्पल, कोणार्क। जब विश्व के नेता मेन हॉल में पहुंचे और जा रहे थे गैलरी से, हमारी 5000 साल की संस्कृति वहां दिखाई दी। इस मौके पर मैं खास तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी को और चांसलर साहब को एक अनुरोध करूं। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें संविधान दिया, सोच विचार कर दिया। संविधान निर्माताओं ने करीब 3 साल तक, अब कुछ लोग कह देंगे 3 साल से कुछ दिन कम थे इसलिए मैं करीब कर रहा हूं, 2 साल 11 महीने और कुछ दिन थे, तपस्या पूर्वक काम किया। संविधान सभा में कभी कोई व्यवधान नहीं हुआ। उनके सामने जटिल समस्याएं, दे ग्रेपल्ड विद मोस्ट कंटेंशियस इश्यूज। डायलॉग, डिबेट, डिलिब्रेशन, डिस्कशन हुआ। डिसरप्शन कभी नहीं हुआ, डिस्टर्बेंस कभी नहीं हुआ। जब डिस्टर्बेंस और डिस्टर्बेंस होता है, मेरे मन में बड़ी पीड़ा होती है। पर इसका समाधान बॉयज एंड गर्ल्स आपके साथ है। You have to hold accountable those who believe in disruption, disturbance, weaponize it as a political mechanism. ये रुकना चाहिए। Our representatives have to be extremely alive to the values set by the members of the Constituent Assembly. दूसरी, उन्होंने जो हमें संविधान दिया, उस संविधान में 22 चित्र हैं,
5000 साल की हमारी सांस्कृतिक विरासत की झलक है। सारनाथ में अशोका का जो चिन्ह है उसमें है, गुरुकुल की परिपाटी उसमें है, माननीय महामहिम राज्यपाल। और जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है उसका, जिसको हम कहते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, नेक्टार ऑफ डेमोक्रेसी, अ सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, उसके बिना डेमोक्रेसी अधूरी है। उस मौलिक अधिकार का जो पार्ट है, उसके ऊपर जो चित्र है, वो चित्र राम, सीता और लक्ष्मण का है। देखिए, राम, सीता और लक्ष्मण हमारे संविधान के हिस्सा हैं, और जो किताबें प्रसारित हैं उनमें वो चित्र क्यों नहीं है? वी मस्ट इंसिस्ट कि वो 22 चित्र आए। उन चित्र के अंदर पार्ट 4 में भगवान श्री कृष्ण हैं, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि में हूं आज के दिन। मुझे जब रामचरितमानस दिया, मैंने कहा, मन में सोचा, गुजरात में हर आदमी बहुत सोच समझ कर काम करता है, नाप तोल कर काम करता है, मौके की नजाकत देखते हुए सही दिए। इसमें यदि आगे देखेंगे तो सब महापुरुष उसमें आए हैं। गुजरात in the nation and in the world is looked up as epicenter, nerve center of epochal change. कुछ लोगों ने कहा कि आप उपराष्ट्रपति हैं और आपको थोड़ा राजनीति से अलग हटना चाहिए। सही बात। I am, boys and girls, not a stakeholder in politics, but I am a stakeholder in nationalism, in governance. मैं इस बात से पीछे कैसे हट सकता हूं कि भारतीयता मेरी पहचान है, मेरा देश भारत महान है, इसकी अप्रत्याशित, अकल्पनीय प्रगति को देखकर मैं अभिभूत हूं। आई फील एज प्राउड इंडियन, टेक प्राइड इन फिनोमिनल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और क्यों नहीं, आई वॉज फर्स्ट इलेक्टेड टू लोकसभा in 1989. I was fortunate at young age to be a minister in the central government. मैं उस सरकार का हिस्सा था। हमारे मन में पीड़ा थी, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। हमारी साख बचाने के लिए हमारा सोना फिजिकल शेप के अंदर हवाई जहाज के माध्यम से स्विट्जरलैंड के 2 बैंक में गिरवी रखा गया। कारण हमारा फॉरेन एक्सचेंज 1 बिलियन और 2 बिलियन के बीच में झोल खा रहा। तभी मैंने कहा, यहां गत बार आया था, माननीय मुख्यमंत्री भी थे, इस मिट्टी में कुछ खास है। गुजरात की मिट्टी में कुछ खास है, क्योंकि हर कालखंड में यहां के महापुरुषों ने हमें रास्ता दिखाया है, देश का निर्माण किया है। महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल जी, और आज के युग में श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जो कानून के विद्यार्थी हैं। और कानून के क्यों, हर किसी को अजीब लगता था कि आर्टिकल 370 क्या है, आर्टिकल 35 कैपिटल क्या है। संविधान में जिसको टेम्पररी कहा गया है वो नासूर बन गया है और परमानेंट है। जो सोचा, जो कहा, वो आज हकीकत है। आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सरदार पटेल जी वो नहीं चाहते थे। आपको इतिहास में थोड़ा प्रकाश डालकर बताऊंगा कि भारत के संविधान में और देश के एकीकरण में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। सरदार पटेल, द आयरन मैन, was involved with integration of all the states
एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। कहीं कोई समस्या नहीं रही, जम्मू एंड कश्मीर में समस्या। If he was to be involved with integration of Jammu and Kashmir, boys and girls, trust me, कोई दिक्कत नहीं होती। और दूसरा, डॉक्टर B.R. Ambedkar, chairman of the drafting committee, father of our Indian Constitution, he drafted every article of the Constitution except Article 370. तो सरदार पटेल एंड डॉक्टर अंबेडकर, उनको दो बातों से एसोसिएट नहीं किया गया तात्कालीन नेतृत्व ने, और नतीजन उनका हल इस कालखंड में निकल रहा। यह कालखंड भारत के विकास का है, यह कालखंड हमारे उस उदय का है जहां हमारी संस्थाएं नालंदा, तक्षशिला थी, हमारा व्यापार दुनिया के हर कोने में था। मैं बहुत विस्तार से नहीं कहूंगा, पर इतना अवश्य कहूंगा कि each one of you is capable of doing extraordinary things. बिल्कुल मत घबराइए। I am product of education. स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो आगे पढ़ाई नहीं कर पाता। गांव में पढ़ने जाता था 4-5 किलोमीटर, गर्मी में सुबह की क्लासेस होती थी, तो जिस गांव में स्कूल है वहां तो ठीक था, पर हम तो दूसरे गांव से जाते थे, तो हम स्कूल के बाद तब आते थे जब सूरज ऊपर होता था, गर्मी तीव्र होती थी। और कहीं भी मैं और मेरे साथी, वो मेरे से ज्यादा सक्रिय रहे हैं, कहीं भी हमें गोबर दिखता था, हम पांव देते थे कि आने वाले 300-400 मीटर तक हमें जलन कम हो। देखा हुआ है। आज के दिन देश का नेतृत्व कहां है? राष्ट्रपति भवन में जनजाति की महिला, आपके साथ वो राज्यपाल रही हैं, मेरे को भी सौभाग्य मिला है, भारत की प्रथम महिला है। कभी कल्पना की थी इतना बड़ा बदलाव आएगा? एक किसान का बेटा। और आपको आज बताता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने। आपको आश्चर्य होगा मेरी पहली मुलाकात उनसे कब हुई। मेरी उनसे पहली मुलाकात पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से हुई। 2014 से लेकर जुलाई 2019 तक न मैंने समय मांगा न मेरी मुलाकात। नतीजन क्या निकलता है? स्काई इज द लिमिट फॉर ऑल ऑफ यू। वो दिन गए जब बिना भ्रष्टाचार के, बिना पैट्रोनेज के, बिना सिफारिश के कोई काम नहीं होता था। Our power corridors have been duly sanitized of corrupt elements. Those elements who used to extra legally leverage decision making, उनकी छुट्टी हो गई है। जब इतना कुछ होता है तो कुछ लोगों के मन में घबराहट आती है। वो देखते हैं कि हमारे तो अच्छे दिन चल रहे थे, अब बेचैनी के दिन आ गए। वो मानकर चलते थे कि कानून हमारे तक कैसे पहुंचेगा, कानून तो हमारी मुट्ठी में है, कानून हमारी कठपुतली में है, हम कानून के जंजाल में कैसे पहुंच सकते हैं। उनकी गलतफहमी दूर हो गई है। ये जमीनी हकीकत है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। देश में कानून का राज है, बिना कानून के राज प्रजातंत्र का कोई मतलब नहीं है। और कानून दस्तक वहां दे रहा है, उन घरों पर दे रहा है जिनको उम्मीद नहीं थी कि कानून हमारा कैसे यहां आ सकता है। पर बॉयज एंड गर्ल्स, इट्स अ चैलेंज टू यू। व्हेन द सिस्टम वर्क्स, when the corrupt are being held accountable in a transparent manner, when the nation has robust judicial system, when notice goes to these people, they take to streets. Every thinking mind, particularly young minds and discerning minds like you, must get on social media. How can this be allowed? You are greatest stakeholders in growth of this country by virtue of your age and education. The nation belongs to you more than me and others. You have to take this nation to great heights.
You want equality before law, you want transparency and accountability in governance. The leadership is dying for it. We must rise to the occasion. Our observance of silence will be most inappropriate. It will resonate in your ears for years to come. Do whatever you can because your action will matter. You are the one who have to guide the destiny of this nation. Boys and girls, when I look around the globe, पहले सोचते थे हमारे ऐसी सड़कें होंगी, क्या हमारे ऐसी बिल्डिंग्स होंगी, ऐसी रेलवे स्टेशंस होंगी, क्या इंटरनेट गांव तक पहुंच जाएगा? और आज के दिन जो भारत को कमजोर बताते थे, वो वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक has indicated formally that India is the fastest growing economy amongst larger economies, ahead of every economy in the world. Our digital transactions, a dream of Prime Minister Narendra Modi, is now ground reality. In 2022, boys and girls, not my figure, our digital transactions were 4 times the digital transactions of USA, UK, France and Germany taken together. We never thought of this. Our people in the villages may not have had formal education, but they know how to use smartphone now. And per data consumption of internet in Bharat in 2022, official figure, it was more than that of USA and China taken together. I appeal to all of you, avail the opportunities. There are many of them. When I was giving medals, I asked each of them, what would you like to do? That was my question. I was so happy to note that they were having futuristic outlook. Take, for example, legal profession. Normally 2 things will emanate. Litigation. क्योंकि पिक्चर में वकील दिखता है, एक जोली एलएलबी देख ली तो वकील. और दूसरा जुडिशरी. None of them said so. They are in tune with the latest. I will not take more time, but absence of my wife makes me a little more productive. She has gone to a school. वरना महामहिम राज्यपाल और महामहिम मुख्यमंत्री जी ने जो सद्भावना के शब्द मेरे लिए कहे, वो शायद खड़ी हो जाती कि मैं ज्यादा जानती हूँ. I have to make 2 announcements, and I take Dr. Nirja Gupta agrees to them. 1, I am enthused, motivated, inspired the moment I stepped into the premises, and the excellent decorum you have. When I look into your eyes from a distance, my vision is all right. And vision has 2 dimensions. One is a physical vision, the other vision is figurative. Both are right. Trust me, you can take it as such. Indian Council of World Affairs is a global organization situated in Sapru House that gives you a window to the world and is headed by enormously talented woman, Ambassador Thakur. So I will catalyze a good relationship between the 2 ladies, Ambassador Thakur and Dr. Nirja Gupta. There will be an MOU between Indian Council of World Affairs and Gujarat University. Ambassador Thakur will herself come here, and boys and girls, this will happen in next 30 days. Second announcement, I invite boys and girls to visit
new building of Parliament as my guest. I started with boys and girls from Andaman and Nicobar, from Northeast, wherever I have gone. But here I will change the invitation. The invitation is to all of you come in batches. All of you. And then you'll find in 30 months a building did not come in spite of COVID. What was inside that building is much more than what was built outside. और उसमें गुजरात का विजन भी है, गुजरात का थॉट प्रोसेस भी है, और पूरे देश की भागीदारी है। जाते ही आपको एक अच्छी पेंटिंग दिखेगी, स्कैन कीजिए, आपको पता लग जाएगा ये पेंटिंग क्या है। टेक्नोलॉजी इज रिट लार्ज इन द प्रेजेंट। कुछ लोगों को बिल्डिंग कंफर्टेबल नहीं लगती है क्योंकि वो राज में नहीं है, और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में तो ये चलता रहता है। वी मस्ट लव टू लिव ऑन बोथ साइड्स। लेट मी टेल यू, हल्की फुल्की बातें भी बहुत सही हैं। हमारे यहाँ गुजरात से भी प्रतिभाशाली सांसद हैं। जब मैं राज्यसभा में बैठता हूँ तो सरकार राइट साइड में बैठती है और लेफ्ट साइड में प्रतिपक्ष बैठता है। अब मेरा दिल तो लेफ्ट साइड में है, तो मैंने कहा कि मेरा दिल तो लेफ्ट साइड में है, तो उन्होंने कहा कि मोहब्बत हमसे, शादी उनसे। फिर एक ने कहा नहीं 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 नहीं, आपके दिल में तो आप कह चुके हैं कि आपकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश है, तो फिर हमारे लिए स्थान ही कहाँ है। बट लेट मी टेल यू, राज्यसभा के सभापति की हैसियत से जब मैं कार्य करता हूं तो मेरे सामने आपका भविष्य है। मैं नहीं चाहता कि प्रजातंत्र के मंदिर इस तरीके से कलंकित हो जाएं कि आप लोगों को लगे कि वहां लोग यही करेंगे क्या। हुल्लड़बाजी, नारेबाजी, पोस्टर दिखाना, सीट पर नहीं बैठना, योगदान नहीं करना, इसलिए तो आप किसी को नहीं चुनते हो। शालीनता से अपनी बात कहो, मैं किसी को नहीं टोकता। मैंने यहां तक कहा हुआ है कि आधी रात तक चलाऊंगा सदन को। आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। पर समाज में यदि अगर कोई सबसे प्रभावी समूह है वो बॉयज एंड गर्ल्स आपका है। आप यदि अगर शासन व्यवस्था और प्रजातंत्र के सारथी होंगे तो ये देश जिस गति से जा रहा है वो गति अरिथमेटिक न होकर ज्योमेट्रिक होगी। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने माता पिता का सदा सम्मान करेंगे और गुरुजनों के बारे में वो भूल जाएंगे कि उन्होंने आपसे कितनी शक्ति की थी। जो शक्ति उन्होंने की थी वो आपके हित में थी, ये आपको धीरे धीरे पता लगता रहेगा। महामहिम राज्यपाल ने बहुत अच्छी बात कही, आपकी शिक्षा यहाँ खत्म नहीं होती है, यू विल हैव टू कंटिन्यूअली लर्न अबाउट इट। और उसका पहला उदाहरण देख लीजिए, कभी भी नदी में खड़े होकर देख लीजिए, जो व्यक्ति एक स्थान पर खड़ा रहना चाहता है उसके नीचे की मिट्टी निकल जाती है। एक स्थान पर खड़े रहने के लिए भी कदम ताल करना पड़ता है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। जय भारत। थैंक यू।